today we are going to start about the first thing, that is the research. What is the research? Okay. So if anybody want to give the answer about the research, what is the research? आप में से कोई भी एक पर्सन जो बोलना चाहता है कि रिसर्च क्या है, बताइए क्या होती है रिसर्च, बिकॉज वी आर गोइंग टू Rajesh Chavan here. I think research. देखो पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, वन बाय वन बोलें प्लीज। राजेश जी आप बताएं क्या होती है रिसर्च? Research is basically analysis and evaluation of the analysis. Sir, may I say something? Yeah, please. I want to. Please. Yes, Yeah. so research is the process of identifying something new depending upon the past studies and current studies. Yeah, the very good. That is very, called analysis. Very good. It Very is- good. That is called analysis. It is systematic and scientific research to find out innovative thing. I want to know one thing from your side. What is the difference between the theory and the research? I think theory is based on the historical. Please introduce yourself first, okay? Then you go for answer, okay? Rajesh again. I think Yeah, Rajesh, please. theory is something where we have a data and sorry, what you asked for the data. No, actually, Rajesh ji, different. so theory have some data and research also have some data, but I want to know what is the difference between the theory and the research, okay? Anyway, okay. So this is Dheeraj Solanki here. Yeah, Dheeraj, please. May I attempt to answer this? Yeah, please. So theory is based on experience and research is based on investigation. Totally wrong. Totally wrong. Theory research may be based on the experience also, because observational research, observational research are based on the experience. Totally. Anyway, I think the thing is existed. Research is to find out new thing. I'm giving you a very short answer. Okay. सर मैं सतीश कुमार ज्योति। या प्लीज आप अपना म्यूट कर लीजिए, अब मैं थोड़ा बोलता हूँ, आप म्यूट कर लीजिए। सर मैं कुछ बताना चाहता हूँ, सतीश कुमार ज्योति। हाँ बताइए सतीश जी। हाँ सर, रिसर्च में हम शोध करते हैं नए तथ्यों सिद्धांतों को प्राप्त करने के लिए, और जो पुराने तथ्य सिद्धांत हैं उसमें गुणात्मक सुधार करने के लिए हम शोध का कार्य करते हैं। ओके। एंड थ्योरी? ये तो नहीं पता पेंशन। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। ओके, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। सभी लोगों से म्यूट कर लीजिए। मैं अपना एक आपको प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ, ओके? उस पे आपको जो है पता चलेगा कि हम क्या कर रहे हैं। मोस्टली स्कॉलर्स गिव द वेरी गुड आंसर्स, ओके? और आप सब लोग जो है वहां तक पहुंच रहे थे जहां तक मैं जाना चाह रहा था। देखिए बेसिकली जो है रिसर्च की बात करें अपन, तो मैं आपके साथ एक स्लाइड शेयर कर रहा हूँ, फिर अपन उसमें डिस्कस करेंगे। Okay, it is visible for all? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. देखिए, if you are talking about research, प्लीज म्यूट। बाकी जो लोग हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि म्यूट कर लीजिए। नेहा चौहान, सुमन कमल प्राजोली, जेम्स टोनी, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। ओके, सो फर्स्ट, नेहा मेरी आवाज आ रही है? रचना? Yes, sir. Yes, Okay, sir. please. Okay. So, firstly, we want to know what is the PhD programs. Okay, then we have to know what is the research. Okay, before research, I want to say something about the PhD. Okay,
Persons are registered in the PhD program, but they are not aware about what is the PhD. Okay, means PhD stands for what? So actually, I'm telling you, small, thing about it. Okay, before 5 to 10 year back. Okay, around I think 10 year back. Okay, one students came in my office and she said, "Mr. Please give me the ID card." I put the enrollment number in the system. I gave him ID card. He saw and said, "Me, sir, you give me a wrong identity card." I asked him why. How you can you say like that? I give you wrong. Even your name is there, your enrollment number is there. Then he said, "Sir, I took admission in the doctorate. I'm doing doctorate. Do you know? I'm doing doctorate. And you are giving me the identity card of the Doctor of Philosophy. What is this, sir? I am doing doctorate here. And you are giving me the wrong identity card because there is a mention Doctor of Philosophy." So what I want to say you, people are not aware about what is the PhD. Okay. PhD means Doctor of Philosophy. It's doesn't mean you are doing PhD in the philosophy. Sometimes we are doing PhD in the sociology. Sometimes we are doing PhD in computer science. Sometimes we are doing PhD in the life science. But we are using Doctor of Philosophy for the PhD. Why we are using the PhD word? Even you are not doing Doctor of Philosophy word. Even you are not doing PhD in philosophy. Why are you using the philosophy word? Okay, that is right. If you are doing PhD in the philosophy, then you can write Doctor of Philosophy. That is right. But you are doing PhD in the computer science, then why are you using the philosophy word? Anybody can explain about it? Satish Kumar Devedi, can you tell me why are you using the philosophy? No, sir, जानता नहीं। So actually कहने का मीनिंग है कि हम जो लोग जो है ना सिर्फ ये जानते हैं कि हम डॉक्टर बन जाएंगे, लेकिन ये नहीं जानते कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द PhD, व्हाट इज द मीनिंग। सो मैं इतना बोलता हूं कि सपोज कीजिए कि जो है ठीक है आपने फिलोसफी में PhD करते हैं आप, तो आप बोल, बट इवन एनी PhD like computer science, engineering, science, applied science, you are using the philosophy word. Why are we using philosophy for the PhD program, for the Doctor of Philosophy, for the doctorate program? So थोड़ा सा मैं यदि out of box बोल लूं, if Nepali persons will get it, okay, तो हम क्या बोलते हैं कि if any person is doing different, if saying some different from others, then हम क्या बोलते हैं? Don't be philosopher. क्या बोलते हैं? Don't be philosopher. जब भी आप क्या करते हैं कि जब भी कुछ आउट ऑफ बॉक्स बात बोलते हैं या फिर जब भी आप जो है कुछ अलग बोलते हैं बाकी लोगों से, तो आपका वर्ड जो है एक ही होता है कि फिलोसफी ना दिखाओ, डोंट बी फिलोसफर। सो कहने का मीनिंग है कि फिलोसफी का मीनिंग है कि वी आर द विजडम लवर्स। आप विजडम लवर्स हैं। यू वांट टू गिव समथिंग न्यू फ्रॉम योर आइडियाज, फ्रॉम योर रिसर्च। That's why we are using the philosophy word in each and every subject. Is it clear for why? Is it clear for all? Why are we using the philosophy word in all the programs of the doctorate? Because philosophy means you are the wisdom. Yes, you are giving something new in your subjects. You will be the you will be create something new in your subjects. So that's why we are using the philosophers, okay? Philosophy. That's why we are using the philosophy words, okay? So there is also a Greek word called philosophia, which means love for wisdom. Yeah, love of wisdom.
Yeah. That's why. That's because you are loving with a particular subjects. Okay. If you are loving with a particular things, it means you will give your best. Okay. That's why you are using the philosophy word. So it is clear for all what is the meaning of the PhD. Yes, sir. Yes, clear. Yeah. Yes, Now sir. for if you are loving with some subjects, if you are loving with a particular subjects, okay, then you will do something new. If you are doing something new, that means you are doing research. Okay. जब भी कुछ नया होता है, जब भी आप नया करते हैं, तो इसका मीनिंग होता है कि आप रिसर्च कर रहे हैं. So research, there are the two words, re and search. Re and search. Okay. Yes. So I am showing my presentation. इसको री करना है, दोबारा से इसके ऊपर और खोद करना है. मैं भी देखो उसी पे आ रहे हैं. एक बार बीच में आप ना बोलें, फिर हम लास्ट में डिस्कस करेंगे. मैं जो आपको दिखाना चाह रहा हूँ वो सुनिएगा पहले, कि मैं कि आपको शायद ये डाउट जो आपके हैं वो नहीं होंगे बाद में. So research, re means search and re means research. There are बार. Yeah, research. There are बार. Yeah, please mute yourself, please. Research means there are the two words, okay, re and search. Re means once more, a new, okay, fresh. So if you are doing something new by searching existing knowledge, that is the research, okay. So re means once more, new, fresh, and search means to find out something new. Okay, to find out something, because there is a problem and you want to search the solution of that, then you will go for the research. Okay. So I told you earlier, what is the difference between the theory and the research? Okay. Theory means explanation of the existing things. Okay. Theory means explanation of the existing things. And research means to investigate the existing theory to find out something new. Theory is giving the explanation and research giving the solution. So this is a basic difference between the research and the theory. Okay. If you will know about the how research varies from the search, if you will ask, sir, if you are doing search, then when we will do the research? Okay, what is the difference between research and search? So research means improved knowledge, because you are going to build something new on the existing theories. So research means improved knowledge and search means knowledge only. So if you're searching something, that is the knowledge, you will be aware about it. Okay. But if you are going to build something new, if you want to improve the existing theories, it means you are going for the research. Okay. And search may be non-systematic. Search will be non-systematic, but research will be systematic. Okay. There will be a definite set of the procedures by which you will conduct the research. But in searching, there is no definite set of the procedures. So that is the difference between the search and the research. There is a difference between the theories and the research. If you are going for the research, means you will give them something improved knowledge. But if you are going for the searching only, you will get the knowledge only. So that is the difference between the search and the research. Okay. So what will be the definition of the research as a research scholar? So research is an organized and systematic. Why we are saying the systematic? Because there will be a definite set of the procedure which you have to follow. मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ. सपोज आपको हिमालय जाना है, नेपाल के चारों तरफ हिमालय है. ओके. आपका डेस्टिनेशन है कि आई विल गो हिमालय. ओके. हिमालय जाना है, तो हिमालय जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एक डेफिनेट सेट ऑफ द प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा. ये तो है नहीं कि आपने बोला मैं हिमालय गया और आप हिमालय चले गए. सॉरी सर, लाइन कट गया था सर.
कितने लोगों को मेरी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है? वेंकट, माई वॉइस इज क्लियर? Yeah, it is clear, sir. क्लियर है सर, क्लियर है। Sir, बाकी जिनको क्लियर नहीं आ रहा है, प्लीज वो अपना नेट कनेक्शन चेक कीजिएगा। तो कहने का मीनिंग है कि देखो, इफ यू वांट टू नो समथिंग अबाउट द हिमालय, देन यू कैन गो फॉर द सर्च। ओके, आप वहां का जो एग्जिस्टिंग जो भी थ्योरीज उनको सर्च कर लो, आपको हिमालय का नॉलेज हो जाएगा। लेकिन यदि आप जो है आप जानना चाहते हैं कि जो थ्योरीज उसमें कुछ डेफिशिएंसी है, आई वांट टू गिव समथिंग न्यू, देन यू हैव टू गो देयर, यू हैव टू सी द फैक्ट्स। तो आपको यदि जाना है, हिमालय जाना है, तो देन यू हैव टू मेक ए प्लान। When will you start? How will you go there? And when will you reach there? And what will you see there? Okay, so that is a definite set of the procedure. If you are going for the research, then you have to follow a procedure. That's why we are saying the systematic and organized. If you are giving answer of, suppose कीजिए कि मैंने मेरे माइंड में क्वेश्चन आया कि पचेरी बड़ी में वुमेन्स का लिटरेसी रेट बहुत कम है। दिस इज द क्वेश्चन, ओके, इन माइंड। ओके, कि मेरे को लगता है कि पचेरी बेड में वुमेन्स का लिटरेसी रेट बहुत कम है। हाउ विल यू गो टू आंसर द क्वेश्चंस? आई नीड सम बेसिक बैकग्राउंड्स, ओके, लाइक डेटाज, आई नीड सम एनालिटिकल टूल्स। So we for the getting the answer of a particular questions, I need some procedure. I will follow some procedure, then I will get the answers. Okay, that's why we are saying research is a systematic and organized way to answer the questions. Is it clear for all? yes, sir, clear. Yes, sir. Yes, sir. Clear. Now I'm again sharing the slide. Okay. So what is research? Research is defined as a careful consideration of the study regarding a particular concern solving using scientific methods. Meaning is that if you want to solve a problem, then you have to go for a particular set of the procedures. That is the research. Okay. ये कौन है जिसका? रेखा, प्लीज म्यूट yourself, प्लीज रेखा। So that is the research. Okay, now if you are going for the research, then you should follow the research methodology. You need some research methods. Okay, so what is the difference between the methods and the methodology? Research methods means methods which be used by you people, that will be the methods. And what is the way to use the research method? That is the methodology. Okay, so methods that researchers adopt for conducting the research studies, that is the methods. Okay, and path and way in which research problem are solved, that is systematically, that is the research methodology. Okay, so this is the basic difference between the basic difference between methods and methodology. Methods means what type techniques, what type methods are you using to solve the problems. Okay, and what is the way in which you use the research method, that is the methodology. So the main question is that why people does research क्यों करते हैं? If I will ask a question from you, why are you doing research? Then what will be your answer? Anyone? Poonam, क्यों research कर रहे हो आप? So in order to identify something new. Find out the new ideas, sir. To find out the new ideas. मैं बोलता हूँ, सब लोग गलत बोल रहे हो आप. You are not giving a right answer. Identify the problem. मैं बोलता हूँ कि आप सब लोग गलत बोल रहे हो, तो आप क्या बोलोगे? मैं बोलता हूँ you are doing PhD for the degree only. You want to take a degree. सर, सोच के द्वारा हम देश और समाज को कुछ नया देते हैं अपने विषय में. नहीं, मैं बोलता हूँ आप डिग्री के लिए कर रहे हो, क्यों बात कर रहे हो देश की? तो खुद का भला नहीं कर सकते, दूसरे का भला कैसे करोगे? If you cannot do better, get academic degree also, sir. Yeah, definitely, that is the main purpose ना. That is the main purpose, है ना? क्यों हम बड़ी बड़ी बातें करें, समाज की सेवा करेंगे और देश की कुछ नया सर्च करेंगे और देश के लिए ये हम एक मॉडल बना देंगे,
ठीक है, वाई वी आर टॉकिंग लाइक दैट, वी वांट टू टेक ए डिग्री सिंपली, इसलिए हम करते हैं रिसर्च की हमें डिग्री मिल जाए। Yes, sir. We are self-centered actually for degree. या हाँ, जो अपना भला नहीं कर सकता वो दूसरे का भला क्या करेगा। तो वास्तविकता तो यही है जो है। हाँ, तो वास्तविकता तो बात वही करें ना, वास्तविकता की बात करें, और वास्तविकता को हम कैसे अच्छा बना सकते हैं उस पर बात की जाए कि हाउ कैन वी गेट ए बेटर डिग्री, दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग। ओके, we want to take a degree, but how can we get a authenticated and true and valid and a degree which can be useful for others. So डिग्री में लेना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन डिग्री को लेने का प्रोसीजर क्या होना चाहिए, दैट इज द इम्पोर्टेंट। तो देखिए, मैं आपको ये बात बोलता हूं कि ठीक है, मान लिया वी आर डूइंग PhD फॉर द एकेडमिक डिग्री, ओके, हमें डिग्री की नीड है, लेकिन क्या ये डिग्री लेना ही रिसर्च है? इट इज सफिशिएंट टू टेक ए डिग्री? नो सर। No, sir. कैसे हम डिग्री को कैसे लें? ये डिग्री को हम कैसे लें, किस तरह से डिग्री को लें ताकि हमारी डिग्री जो है वो हमें सेल्फ सेटिस्फेक्शन भी दे, कंट्री के काम भी आ जाए, सोसाइटी के काम भी आ जाए, और हमारा काम तो हो ही रहा है ना, हमें तो डिग्री मिल ही रही है। तो कहने का मीनिंग है taking degree is necessary condition and doing something new is sufficient condition. तो डिग्री हम इस तरह से लें कि उसमें जो है हमारे जो बाकी जो ऑब्जेक्टिव है वो फुलफिल हो जाएं। सपोज कीजिए कि आज की डेट में देयर आर सो मेनी पर्सन्स दोज आर अटेंडिंग द कोर्स ऑफ क्लासेज एंड दे हैव एज मोर देन 60, मोर देन 65। क्या उनका पर्पस डिग्री लेना है? क्या उनको डिग्री से बेनिफिट मिलने वाला है? नो, दे आर नॉट डूइंग PhD फॉर द डिग्री ओनली। ओके, इन सेम ग्रुप you will observe, या प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है बीच में बोलना। जब मैं बोल रहा हूँ बाद में आप बोलिए, मेरे को कुछ बोलना है तो। ओके। तो कहने का मीनिंग है कि इस कोर्स वर्क की क्लासेज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी एज जो है वो मेरे ख्याल से सर्विस की निकल चुकी है, उनको डिग्री से कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है, फिर भी वो PhD कर रहे हैं। वाई दे आर नॉट डूइंग फॉर द डिग्री ओनली, नहीं कर रहे हैं उसके लिए। तो लोग रिसर्च क्यों करते हैं, वही बात करते हैं जो आपने बोला, जो आपने पॉइंट्स बोले हैं। जो आपने पॉइंट्स बोले हैं डिग्री के लिए, वही पॉइंट्स में बात कर रहा हूं मैं, उन्हीं पे बात करेंगे कि कैसे हम डिग्री ले सकते हैं और किस तरह से रिसर्च कर सकते हैं। तो मेरा कहने का मीनिंग है कि रिसर्च कीजिए, वी हैव टू कंडक्ट द रिसर्च फॉर द डिग्री, बट व्हाट विल बी द वे टू गेट ए रेपुटेड डिग्री? ओके, वी विल टॉक अबाउट इट। ओके, so desire to get research degree along with its definitely जो भी इसके बेनिफिट्स होंगे उसके साथ में हम डिग्री लेना चाहते हैं। तो फर्स्टली मैंने सबसे पहला यही लिखा है, why people does research, they want to get a degree only। okay, but my dear students, you can take a degree, you can get a degree, but there are the few things which can be done by you. Suppose you are doing research, take a such type problems which give a basic solution of the problems. Okay, you can take a small problem in your research which is related to your local area, which is related to your society, which is related to your country. I'm not saying you take a biggest problem of your country, biggest problem of the world. Okay, you can take a small problem for PhD program and try to solve it. Okay, so desire to face the challenge in solving the unsolved problems, you will get the degree. But my dear students, please take a problem about your country, about your society, about your local areas, so definitely you will get the degree, and you're also giving a solution of a particular problems. So many persons, those doesn't require the benefit of the degrees, they are doing PhD for the intellectual joy.
they want to give something creative. So desire to get intellectual joy of the doing something creative work, okay. Those persons not getting the benefit from the PhD degree, why they are doing? Because they want to joy, intellectual joy, and desire to be service to society, okay. If you are going to solve a local problem, small problems about your country, about your society, definitely you are serving for the society. And if you will get your degree with the following factors, means and solve the problems, so solve the problems, creative work, society of service of the society, then definitely you will get the respect, okay. Definitely you will get the respect. So what I'm saying, you get your degree with respect. Definitely such type degree will give you respect, okay. If you are doing some cheating, if you are going to modify the previous works, it means you will not get the respect. You will get a degree, maybe you get the benefits, okay, but you will not get the respect. You will not get the intellectual joy, and you will not solve the problem which are facing by our societies and countries. So what I'm saying, you try to take a problem, small problem, during the duration of the PhD program, and try to solve it systematically. Definitely you will get the respect, you will enjoy it. Definitely you are going service of the you are going for the service of the society, okay. And डिग्री तो है ही आपके पास में, तो मिलनी है. जब आपके पास 3 साल का टाइम है, जब हम 3 साल का टाइम हम लेंगे, तो क्यों नहीं हम जो है इस तरह से अपनी रिसर्च की डिग्री को कर रहे हैं, जिससे आपको जो है खुद को भी सेटिस्फिकेशन भी हो, सोसाइटी की सेवा भी हो जाए, और डिग्री के तो बेनिफिट्स मिलने ही मिलने हैं ना. वो ये आप कैसे कर सकते हैं? इफ यू आर स्टार्टिंग योर वर्क फ्रॉम टुडे ओनली, ओके. ये आप सोचते हैं कि आई विल डू वर्क आफ्टर 2 years and 3 years, definitely you will go for the manipulation of the previous works, okay. यदि आप चाहते हैं really, if you want to really need a degree which gives something new, which solve some problems, which will give you respect, okay, then you have to start from today. आज से ही आपको स्टार्ट करना पड़ेगा. कहीं नहीं लिखा है ये, there is no written anywhere. You have to choose a big problem, okay. You can take small problems which are facing in your nearest areas, in your countries, in your society, even in your family also. So you have to design, you have to think about it, okay, to get a degree by the solving a particular problems, by giving some creative works. That's why the people's doing the research, okay. Now you have to think, you want to go for the research only for getting the degree, and you want to get a degree with the other things, okay. It's your choice. I'm giving assurance. If you will not do anything, then definitely you will get the degree, okay, but you will not get the self satisfaction. कभी नहीं मिलेगा लाइफ में. डिग्री मिल सकती है, लेकिन आप अपना काम खुद नहीं करोगे, अपना काम में आप यदि कुछ नया नहीं लेके आओगे, तो डेफिनेटली आपको कभी लाइफ में सेटिस्फिकेशन नहीं मिलेगा. और प्रेजेंटली जो रिसर्च की जो सिचुएशन चल रही है ना, वो बड़ी स्ट्रिक्ट होने वाली हैं. Take some material from the various resources, and I will go for the spinning the words, okay, and I will get a degree. That will be biggest problem in the coming years, because now the government, now various societies developing such type of software which will quote your manipulated work, okay. So ऐसा काम क्यों कर रहे हैं हम, कि चीटिंग भी करें, फ्यूचर में डरने का डर भी रहे. हम ऐसा अभी से ऐसा करें ना, छोटा सा काम लेके चले ना, जैसे हमारे
जो है डिग्री तो मिलेगी मिलेगी, साथ में जो बाकी जो बेनिफिट्स हैं जो मैंने आपको बताया, कंट्री के लिए भी हो जाएगा, सोसाइटी के लिए भी हो जाएगा, आपके रेस्पेक्ट भी हो जाएगा, आप भी खुद भी एंजॉय करेंगे रिसर्च, क्योंकि नए नए लोगों से मिलेंगे, डेटाज कलेक्ट करेंगे, तो डेफिनेटली यू विल गेट द समथिंग न्यू. So that's why the basic things for the purpose of research I told you. These are the purpose of the researches. Now you can ask me, okay? अभी आपको कुछ पूछना है पूछ सकते हैं. कुछ पूछना है? रेखा कुमारी. नो सर. बिमल बिस्ट. नो सर, ठीक है सर, ठीक है सर. अभी तो काफी कुछ बोल रहे थे, मुझे पूछना है मुझे पूछना है. अभी क्या हुआ ऐसा कि कुछ नहीं पूछ रहे? मैंने बुरा बोला क्या? ना सर, क्लियर हो गया सर, ठीक है सर. तो चलिए, अभी यदि इस तरह की रिसर्च करनी है तो मैं सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हम उसी पे बात करते हैं और आगे चलते हैं लेक्चर पे. सॉरी टू इंटरप्ट यू सर. सर मुझे तो छोटा सा चीज पूछना है. हाँ प्लीज प्लीज. सर जैसे अभी हम एक टॉपिक चूज करते हैं, अगर उसमें एक्सेप्ट हुआ और कुछ दिन के बाद हमको उसका टॉपिक थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ा या थोड़ा ज्यादा मॉडिफाई करना पड़ा, वो पॉसिबल है कि नहीं सर? What's your name? What's your name? Sir, my name is Vishal Gaurav Jha. Yeah, Vishal Bhojja. Actually, once title has been finalized, it will be not changed. It will be not changed. Oh, Definitely okay. you can't change. Okay, so you should select a title which have the broad scope. Okay. If you select a narrow title and after that you want to put something new, then it will be difficult. Okay. So always I'm suggesting you people also please select a research title which have the broad scope. In broad scope containing titles, you can put something new if changes with the time. Okay, sir. So can I have one further question, sir? Yeah, please. Like I work in Nepal Electricity Authority, sir. Actually, बोरा साहिब, Okay. now अभी आप क्या कर रहे हैं, थोड़ा पर्सनल हो रहे हैं. I didn't reach there. Okay, मैं वहां पहुंचा ही नहीं हूँ अभी ना. No, not it's not so personal. It's general. मैं ये पूछ रहा हूँ कि मैं भी अभी मैं टाइटल पे पहुंचा ही नहीं हूँ. अभी तो मैंने आप sir. मेरे से थोड़े से एडवांस चल रहे हैं. आप रिसर्च टाइटल पे पहुंच गए और मैं भी नीचे रूट में ही हूँ अभी ना. मैंने रिसर्च स्टार्ट किया ही नहीं अभी. Okay. I want to start the research. Okay, after that we will reach there, then we will discuss about it. Okay. Okay, sure, sir. Thank you, sir. Are you getting me? Yes, मैं आप लोगों को मैं आपको 0 लेवल से लेके चल रहा हूँ. अभी 0.1 पे पहुंचा हूँ. आफ्टर दैट वी विल रीच ऑन द 0.2, 3, 4, 1. ओके, जब 1 पे पहुंचूंगा तो हम बात करेंगे कि व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ टाइटल, हाउ कैन यू सिलेक्ट द टाइटल्स. ओके, यस. आर यू गेटिंग मी? जी जी. Okay. यस. ओके सर. इसको आप अदरवाइज ना लें, क्योंकि मेरी नेचर यही है, मैं 0 से लेके चलता हूँ. तो अगेन मैं आपके साथ क्लाउड शेयर कर रहा हूँ. So if you are talking about the research methods and research methodology, then which type procedure we have to follow to solve any problem. Okay, what are the steps, what are the steps of the research process, how will you conduct the research. Okay, which type of steps you have to follow. So if you are talking about the steps of the research process, then firstly you have to identify and formulate the research topic and problems. Okay, so first thing is that you have to identify your research problems. What research problem you are going to study. So basically this is the main part of the research. Okay, if we'll talk about the
if you talk about the percentage of the of the research process, okay, which factors, which points have the percentage, okay, how many percentage, okay, sorry, okay, how many percentage, okay. So if you are able, suppose your research is 100%, okay, if you are able to define, to identify the research problems, means you have completed your 50% research, okay. So defining the research problem is the main part of your research, okay. If you define in a very well manner, if you define your problem very specifically, okay, so it means you have completed 50% research, okay. So basic thing is that if you completed the first step, means you completed your 50% research. So this is the main thing of the research process, of the research, initiation, okay. So first thing, you have to identify the problems and you have to formulate your research problems, okay. So identify and formulate the research problems, that is the first point, okay. You have to, I will tell you how will you identify, okay, don't worry about it, okay. I will tell you how will you identify and how will you formulate, okay. So don't be confused about it. I will tell you in detail, okay. Literature search and review, okay. Literature search and review, this is also related with the identification of the research problems, okay. This is the very important, what literature is exist in your particular area. So that is the literature search and review, okay. After that, after searching the review, after the literature, searching the literature and reviewing the literature, you will go for the research objective, research questions and hypothesis. If you identified the research problems, then if you are identified the knowledge which is exist in your area, then you will decide the objectives and hypothesis, okay. If you defined the objective, you decided objective and you defined hypothesis, then you will go for the procedures, which type research methodology, means which type methods and you are going to use to get the results, to get the data. So fourth one is the research approach, design and, okay. So after identifying the research problems, okay, you will go for the design of the objectives, hypothesis, okay. When your objective and hypothesis okay defined, then you will go for the research methods, okay, which type methods will help you to get the results, and then you will collect the data, okay. You will collect the data, okay, through the help of the research methods, through the help of the research methodology, okay. When you collected the data, then you will go for the data analysis. If you going for the analysis of data, then you will get the some results, and the results will be generalized, okay. So these are the steps of the research process, okay. If any persons those are doing scientific research, they need the following steps, okay. First, identification of the problem. Second is the literature review. It is also part of the identification of the problems, okay. Then research objective, problems, hypothesis and research methodology, then data collection and the data analysis and the generalization, okay. Again, I'm talking about, like, okay, if you are able to see it, okay. Suppose you identify the questions, okay. Questions identified, okay. If you identify the questions, okay, then you will go for the objective and the hypothesis. Then you will go for the research plans, means research methodology. Through the research methodology, you will collect the data, and then data will be analyzed and you will go for the results, okay, means generalization of the data, okay. So after analysis, you will go to the results, okay. These results, your study which you established will be used by the other research scholars to take some questions, okay. They will study and will get the some questions, will identify the some new questions, okay. New questions will be arising in their mind. Again, they will go for the go for the hypothesis, research plan and the data collection and the result
interpreted. Okay, means research is a continuous process. Research is a continuous process. Okay, if you are going to establish something new, that will be that your new results which established by you, that will be used by the coming scholars. They will identify research problems in your established knowledge, then they will go for the research. Okay, so the research is a continuous process. Okay, again I'm sharing the slide. Okay, so these are the components of the research methodology. As I told you earlier, you formulate the hypothesis and objective and design the research study, means research methodology methods. Okay, data collection, data analysis, interpretation, and the reporting means results. Okay, so as a research scholar, if you going to fragments, if you are going to make fragments of the research components, then what percentage you will give to the a particular research fragments. Okay, like there are so many fragments. Okay, first fragment is the identification of the problems, second is designing the study, third is the interpretation of the results, and the discussions also there. Okay, so as a research scholar, if you are going to make the percentage, if you are going to assign the percentage to the various research components, then you will give 50% to the defining the research problems. Okay, defining the research problems means it includes the identification of the problems, review of literature, and formulation of the hypothesis. These three things comes under the defining the research problems. Okay, if you completed these three steps very on with honesty, okay, with very carefully. Okay, so then you can you can complete 50% your research work. Okay, and the remaining 25% is designing the research. Okay, means research methodology. If you have identified your research problems, then it is important to solve the problems by a particular research design. What type research design you will used. Okay, so this is the 25%. Okay, then 15%, because research designing you will get the data, 15% interpretation of the result. You are getting the very good data, but you are not able to interpret them. It is very difficult to give the best results. Okay, so 15% to the interpretation of the results. Okay, and 10% the discussing and presenting the conclusions. Okay, so this is the percentage of the fragments of the various research components. Okay, so as a as a teacher, I will say you first thing is that you have to identify the research problems. If you are able to identify the research problems, means you have completed your 50% of the total research. A good impact research outcome depend on the how well the research problem is defined. Okay, how well the research problem is defined. Okay, if you are not able if you are not able to define the research problem in a particular manner, in a very well manner, in a very creative manner, it means you are not going in the right direction. So पहला स्टेप यही करना है आपको कि रिसर्च प्रॉब्लम जो है उसको आइडेंटिफाई करना है. अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन जरूर आना चाहिए, सर आपने बोला फर्स्ट स्टेप टू आइडेंटिफाई द रिसर्च प्रॉब्लम्स. हाउ विल research problem can be how will research problem identified? How will I identify the research problems? How will I get the research problems? Okay, so ये सबसे पहला स्टेप होता है. तो सबसे पहले यही सोचना है आपको कि आपको रिसर्च प्रॉब्लम्स कहाँ से मिलेंगे, रिसर्च कैसे कंडक्ट करनी है. पहले का पहला काम क्या है, फर्स्ट काम ये है कि यू हैव टू
identify the research problems. Identification research problems में क्या क्या आती हैं आपकी? Review of literature इसी का पार्ट होता है. Hypothesis design and objective design इसी का पार्ट होता है. If you have identified the research problems, then you will go for the particular research design. What type research design you have to adopt? You will go for the qualitative, quantitative. What will be the sample? What will be the procedure of the sample collections? Okay, we have to think about it. Okay. After that, you will go for the, if you are adopt a very good research design, then you will get the data. Okay. You will get the data. Okay. After collection of the data, you will go for the data analysis. You will analyze it. Okay. And then after analysis, you will go for the results. And results also will be discussed with the previous studies. Okay. How are they differ from other previous studies? So these are the basic procedure, basic components of a research. But as a teacher, again, I'm saying you 50% research will be finished if you identify a particular research problems. 50% वही काम हो जाता है, अलग जाने की जरूरत नहीं पड़ती आपको. If you identified a weak research problem, it means you have been finished your research work at the early stage. तो पहला काम यही है कि कैसे हम जो है रिसर्च को आइडेंटिफाई कर सकते हैं. आप मुझे बता सकते हैं कैसे करेंगे? हाउ विल यू आइडेंटिफाई द रिसर्च प्रॉब्लम्स? कुछ पूछना है आपको मेरी साइड से? कुछ पूछना है? इफ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन फ्रॉम माय साइड. ओके. Recurrent problem, if whatsoever recurrent problem that appear around us, like in an organization, that could be solved through doing some research. So how broad can be a research? Means if how broad could be the scope of a research, and how narrow should be the scope of a research? That would be my question, sir. I didn't get your point. Can you explain it again? I didn't get your point. Okay. Can you explain it? Okay. Just for example, if we are working in some organization, like some electricity organization, there could be many recurrent problems, like load problem or power cut problem. Yeah, I got your point. Okay. So what could be our topic? Like again, I'm going to the topic. So actually, if you are going for the identification of the research problems, okay, then you should think about your near. Can I see, sir? Yeah, definitely. I'm saying okay, definitely. Okay, please give me some time. Okay. If you are thinking about your research problem identification, okay, then how can you identify the research problems? Okay, you can identify the research problems by your experience, because you are facing the such type problems in your working organizations. Okay, so research problem can be identified by the experience also. Okay, if your experience is very bad there, your experience is very good there, okay, then you can design your problem, you can identify your problem according to your experience. Okay, but after thinking about the experiences about your office, about your organization, you should go for the literature. Okay, if you are not able to search the literature about the identified problems, then you will not get the sufficient support. Okay, suppose you are thinking about I'm facing some problems regarding my colleagues are not supporting me. Okay, then you have to go why my colleagues are not supporting me. Okay, and if I problems about the support of my friends, okay, then what type changes I have to make in my office? Okay, what type changes I have to make in my office for the reduction of the power cut? Okay, so basically experience give you the ideas about the research problems, but you have to search about these ideas in the existing theories also.
what existing theories are saying there. Okay. So first you think about the experience. First you think about the your problems which are faced by you in the in your life. Okay, but it's not sufficient. It's not sufficient. You have some experience. If you have about your office, about your family, about your country. Okay, but what you have support for the solving of the problems which are faced by you. Okay, so you definitely, I'm agree with you. You can take you can identify your problem by the experience also, but what type knowledge has been established by the previous authors, you have to take support from there. If you are thinking about the organization, or if you are thinking about your organization, okay, you are facing so many problems, then don't okay, problems are there, but how can you solve it? Okay, so for that you have to take some support from the previous studies, what previously established theories are saying about it. Okay, so actually, if you're thinking about the problems, problem identification, I'm agree with you. You can identify the problem by your environment. Okay, आपका जो environment है उससे आप identify कर सकते हैं. You can identify the problems from the previous studies also. Okay, suppose your interest in the cloud computing, you can go for the you can go for the previously studies, theories, previously studies, previously studies the research also. Okay, you can get what type cloud computing have the problem in the present scenario, and you can identify from there. So जो भी आपका जो प्रॉब्लम का आइडेंटिफिकेशन होता है ना, वो आपके नियर बाई एरिया से ही होता है. आप जैसे अभी सपोज कीजिए कि few students are not supporting me, okay, during the online classes. Okay, so I identified. Okay, but I have to think how can I solve it. Okay, and what is the reason why the students are not supporting me, and how can you solve it. Okay, so वही तो रिसर्च होता है. सपोज यही तो रिसर्च है कि आपको पर्टिकुलरली आपका जो एनवायरनमेंट है, आपका जो एक्सपीरियंस है, उससे आपने क्या आइडेंटिफाई किया और उसको कैसे सोल्व करना है. दैट इज द रिसर्च फॉर. एंड हाउ कैन यू सोल्व इट? वी हैव टू टेक द सपोर्ट फ्रॉम द प्रीवियस स्टडीज. सिमिलरली कुछ स्टडीज प्रीवियसली हुई होंगी, उन्हीं को हम सपोर्ट करके कर सकते हैं. जो पहले कोई डिफरेंट कंट्रीज में, डिफरेंट सिनारियो में, डिफरेंट इन्वायरमेंट में इस तरह की स्टडीज हुई हैं, उनमें क्या उन्होंने जो है रिसर्च मेथड्स अप्लाई किए हैं और क्या हम उनसे डिफरेंट कर सकते हैं. सो कहने का मीनिंग ये है कि प्रॉब्लम का जो आइडेंटिफिकेशन है वो कई जगह से होता है. आपका जो वर्किंग प्लेस है वहां भी हो सकता है, आपकी कंट्री से भी हो सकता है, आपकी स्टडी से भी हो सकता है, आपकी खुद के घर से भी हो सकता है. सो आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम कैन बी टेकन फ्रॉम एनीवेयर. ओके, जहां भी आपका इंटरेस्ट है. लेकिन मेरा ये मानना है कि फर्स्ट यू थिंक अबाउट योर इंटरेस्ट. ओके, व्हाट इज योर इंटरेस्ट, किस में आपका इंटरेस्ट है, तो उसी में आप जो अपनी स्टडी करने की सोचें. तो पहले आपको यही सोचना पड़ेगा कि व्हाट इज माय इंटरेस्ट. आपको प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन आप उसी फील्ड से करें जिसमें आपका इंटरेस्ट है. तो So, problem identification, process of finding or determining what research area is to be studied, from where you can identify. Okay, what area I have to study. Okay, so problem identification means process of finding or determining what research area to be studied. Okay, so identification process have some features. Okay, like interest to the research. Okay, interest to the researchers in which you are interested. Okay, the problem should be significant. Okay, if you are identifying some problem but that is not significant. Okay, so think about it. Okay, you are it's belong to your interest or not, it is sufficient, it's significant or not. Okay, and as such type problems about that you are not able to access the
Okay, the problem is not accessible. Okay, you can't obtain the information. Okay, suppose you are thinking about the army conditions. Okay, of each and every country. Okay, but easily you will not get the data for that. Okay, you can't obtain it. If you are talking about the dispute between the Nepal and the India, and if you want to take some data from the army and the foreign exchange departments, okay, you will not get the support from there. So if you think about it, what problem you are going to choose, okay, what problem you are going to select, okay, so that will be belongs to your interest. That should be have significant importance, okay, and the information which are need to complete to give the answer of the research problems accessible भी होना चाहिए, access भी कर सके आप उसको. If you are not able to get the if you are not able to obtain the information about it, okay, then how will you solve it? Okay, so problem को आप आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं तो उसके क्या क्या फीचर्स आपको ध्यान में रखने हैं, उसी पे बात हम कर रहे हैं. So problem identification process of finding of or determining what research area is to be studied, identifying using the following features, okay. Interest to the researchers, problem should be significant and access wali honi chahiye. Conclusion related to the problem should be derivable, okay. Okay, then it should be possible to state the problem clearly and concisely, okay. So these are the features of the features of the any research problems, okay. Clearly defined होनी चाहिए, कंसाइज होनी चाहिए, ओके, एंड आपकी इंटरेस्ट की होनी चाहिए, और आपका जो है उसके जो इंफॉर्मेशन आप उससे रिगार्डिंग आपको चाहिए वो इजीली आपको एक्सेस हो जाए. दीज आर द फीचर्स, ओके. इफ यू आर डिफाइनिंग such a problem by such a problem for that you can't get the informations, okay. So what is the value of that type of research problems, okay. So always try to identify the research problem from your interest होनी चाहिए, significant होनी चाहिए, उसकी जो इन्फॉर्मेशन से रिगार्डिंग जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको इजीली मिल जाए ऐसी होनी चाहिए, ठीक है. और आपको क्या करना है, क्लियरली डिफाइन करना है प्रॉब्लम को, ओके. डोंट बी कंफ्यूज्ड, ओके. तो आपको जो है इस तरह से जो भी आप रिसर्च प्रॉब्लम्स जो है वो जो है उसको जब आइडेंटिफाई करें तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है कि किस तरह की जो प्रॉब्लम्स है हमें लेनी है. जैसे अभी सर बोल रहे थे कि जो है मेरे ऑफिस में सर्टेन प्रॉब्लम्स हैं तो किस तरह की रिसर्च हम कर सकते हैं. So definitely you can design to a research problem which will give the some solutions, okay, but you have to think about it, okay. You will get the data for the support of the study or not. So it is clear for all. Yes sir. कुछ पूछना है? Yes, sir. अगेन मैं उसी स्लाइड पे जा रहा हूँ, फिर आगे चलते हैं हम लोग. Yeah, it was nice, very good. Yeah. Yes, sir. I also have one question, sir. Yeah, please. I am finishing my lecture. After that, we will discuss. Okay. So this is the basic things about the identification of the research problems. Okay. You should keep in your mind the following features. Okay. Then from where you can get the research problems, okay. What are the sources of the research problems, from where you can identify, from where you can take the ideas about the research problems, okay. So these are the sources of the research problems from where you can get it, okay. Deduction from the theories. If you are the person of a subject, okay, and there are so many theories established by the previously workers, okay, and previously workers also, and by so many authors and scientists also, okay. So you can take ideas from there, okay. Deduction made from the social philosophy and generalization, okay. If any theory you have studied, okay, and if you have some doubts about it, you can take ideas from there, okay. How can we improve this theory?
So you can take from there, okay. The research problem can be identified from the existing theories also, okay. And if sometimes जो है sometimes हम क्या कर सकते हैं कि कुछ लोगों से हम इंटरव्यू कर रहे हैं, okay. If you're talking about the practitioners, okay. तो जो आप प्रैक्टिशनर्स को जब आप इंटरव्यू करते हैं तो आप क्या कर सकते हैं कि उनके इंटरव्यू से आपको पता चलता है कि देयर इन ए पर्टिकुलर फील्ड देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स existing, okay. So you can take from there also, okay. So interviewing the practitioners, okay. Then personal experience, as I told, okay. Personal experience can be used for the identification of the research problems, okay. So then relevant literature, I told you earlier, okay. There was, if you are thinking about something, okay, then you go for the previously studies, previously जो भी आपकी स्टडी की गई हैं बाय द वेरियस ऑथर्स, ओके, आप उनको भी बारे में सोच सकते हैं. सो दीज आर द सोर्सेज ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम्स, ओके. सो ब्रॉड सोर्सेज फॉर द broad sources for the identification of the research problem, from where you can get it, okay. You can get from the theories, you can get from the practitioners, you can get from the personal experience, you can get from the relevant literatures, okay. These are the sources from where you can get the research problems. You can take some ideas about the research problems, okay. If you will go for the identification of research problems, then you can identify your research problem from the following sources, okay. यहाँ आप ये सोर्सेज को आप यूज करते हैं तो डेफिनेटली आपको जो है आपकी जो रिसर्च प्रॉब्लम है उसका आइडेंटिफिकेशन मिल जाएगा. डेफिनेटली यू विल गेट इट, ओके. सो अभी मैं एक छोटा सा आपको क्वेश्चन पूछता हूं. बार बार हम देयर आर टू थिंग्स, ओके. एक होता है आपका लिटरेचर सर्वे और एक होता है आपका लिटरेचर रिव्यू. आई टोल्ड यू देयर इज अ सोर्स ऑफ द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम्स. वो आपका क्या है? लिटरेचर रिव्यू है. तो दो बड़ी बातें इसमें होती हैं कि एक लिटरेचर सर्वे होता है, एक लिटरेचर रिव्यू होता है. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू थिंग्स? ये आपको सोचना पड़ेगा क्योंकि दोनों डिफरेंट हैं, बड़े डिफरेंट हैं. हम बार बार बात करते हैं कि लिटरेचर का स्टडी करना चाहिए, लिटरेचर का स्टडी करना चाहिए, बट यू हैव टू थिंक अबाउट इट, ओके. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लिटरेचर रिव्यू एंड द लिटरेचर सर्वे? Through literature survey, you can't get the basic ideas about the research problems, okay. Basic ideas about the existing problems, okay. Which type research problems is existing here? You can't go through the literature survey. Literature survey का meaning है कि you are just going to study about the previous works, previous theories. But review करना एक अलग है. Review means what are your opinions about the existing knowledge. So बड़ा important होता है if you are thinking about the about the identification of the problems, if you are thinking about to start your research, तो first step यही होता है कि आपको literature को review करना पड़ता है. If you are not able to review literature in a particular manner, definitely you will be define a particular research problems, okay. You will not be able to identify the research problems, okay. So first thing is that you should think about it, okay, because literature review is also source of the identification of the research problems, okay. You can identify the research problems from your experience, from the existing theories, by interviewing the various experts and the practitioners, okay. So as a researcher, I'm feeling literature review is also a very good source for the identification of the research problems, okay. So what is the difference between the literature review and literature survey? I'm telling you, okay. This is the difference between the literature survey and literature review, okay. A person who is swimming on the surface of the water in a swimming pool and a person who is going deep to see the
So that is assuming, okay, if you are going for the literature survey, means you are going on the morphological things, okay. You are not able to see the facts which are established by the previous authors, okay. So this is the basic difference between the literature survey and the literature review. If you want to know more and deep about the previous studies, what knowledge has been established, what knowledge has been not established, what are the deficiency, what are the controversy, you have to identify, then you have to go in the deep, that is the literature review. और यदि आप एज ए स्विमर ऊपर ऊपर तैर रहे हैं ना, पॉन्ड के ऊपर ऊपर तैर रहे हैं, तो आप लिटरेचर सर्वे कर रहे हैं, मीनिंग यू आर जस्ट रीडिंग इट, ओके, नॉट थिंकिंग अबाउट इट, ओके, नॉट मेकिंग द ओपिनियन अबाउट द प्रीवियस स्टडीज, मीन्स दैट इज द लिटरेचर सर्वे. यही डिफरेंस होता है लिटरेचर सर्वे में और लिटरेचर रिव्यू में. एज ए रिसर्च यू हैव टू गो फॉर द लिटरेचर रिव्यू, नॉट द लिटरेचर सर्वे. You can see in the image, a person is swimming on the surface. He will not get any ideas about the pond. What things are existing is there. Wow, how many types animals are there? How many plants are there? What are the structure of the soil is there? But this person, if you are going for the literature review, this person is going deep and deep. Okay, he will see. She will see what are the plants, what are the stones are there, what are the life is there. He will see about it, okay. Means he can get something more than a person who is swimming on the surface. That is the difference between the literature survey and literature review. So literature so these are the sources. Literature review, relevant literature, okay. If you want to identify the problem, then you have to go for the review of the relevant literature, okay. So my dear students, firstly you have to think about your research problem, okay. आज से ही start करो कि आपको research किस में करना है. You can identify your research problem from the experience, your nearing areas, जहां भी आपको लगता है ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट हो रही है, या फिर आप जो थ्योरीज आपने पढ़ी हैं वहां से आपको समझ में आ सकता है, या फिर आप जो है आपको समझ में नहीं आ रहा तो सिर्फ आप अपने इंटरेस्ट की बात करो. यू थिंक अबाउट योर इंटरेस्ट एंड देन सर्च द प्रीवियस स्टडीज. सर्च करने के बाद में उसका सर्वे करो, और सर्वे करने के बाद में आपको लगता है सर्वे विल हेल्प यू टू आइडेंटिफाई द पर्टिकुलर आर्टिकल इज रिलेवेंट विद यू और नॉट. सर्वे एक काम कर सकता है. लिटरेचर सर्वे क्या कर सकता है, वो आपको ये बता सकता है कि द पर्टिकुलर स्टडी इज रिलेवेंट विद यू और नॉट. If you will go for the literature, then you will find there are the few studies which are relevant with me. Then you go for the review. Okay, literature survey मैं नहीं बोलता literature survey आपके काम का नहीं है, आपका काम का है, लेकिन सिर्फ आइडेंटिफिकेशन के काम के लिए है. सपोज कीजिए मेरा किसी भी फील्ड में इंटरेस्ट नहीं हो रहा है, सॉरी, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, आई एम नॉट एबल टू आइडेंटिफाई द रिसर्च प्रॉब्लम्स. ओके, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है, स्टूडेंट जो है वो ये कहते हैं सर हम तो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं, वी आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई द रिसर्च प्रॉब्लम. ओके, तो उसको क्या करना है, ईच एंड एवरी पर्सन हैव सम इंटरेस्ट. आपका कोई ना कोई इंटरेस्ट जरूर है किसी सब्जेक्ट में, किसी भी पर्टिकुलर फ्रेगमेंट में आपके सब्जेक्ट के. उस फ्रेगमेंट से रिलेटेड जो भी स्टडीज हुई हैं आप उसको सर्च करो. हाउ विल यू सर्च इट, आई विल टेल यू. ओके, इट्स माय रिस्पांसिबिलिटी, आई विल टेल यू हाउ कैन यू गेट द प्रीवियस स्टडीज. आई एश्योर यू कि आपको आप इस लायक बन जाएंगे कि आपको ये पता चल जाएगा कि कहां से हमें रिसर्च स्टडीज गेन होंगी. आई विल टेल यू the things. Okay, how will you get the previous studies? Okay, definitely you will be able. यदि मेरे क्लास में आप साथ साथ चलेंगे तो आपको मैं बताऊंगा कि कैसे आपको प्रीवियस स्टडीज मिल जाएंगी. तो आपको यदि समझ में नहीं आ रहा, आपको यदि अपने एक्सपीरियंस से, आपके थ्योरी जो आपने स्टडीज किए हैं वहां से यदि आप अपनी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं, तो सिर्फ अपने इंटरेस्ट के बारे में बात करें. व्हाट इज योर इंटरेस्ट? इफ यू नो योर इंटरेस्ट देन वी कैन सर्च द प्रीवियस स्टडीज. और वो सर्च करना मैं बताऊंगा आपको कैसे करते हैं सर्च. आफ्टर सर्चिंग द स्टडीज you will get the so many studies regarding to your interest. Okay, after that
you will go for the literature survey. Just you think, okay, survey will give you efficiency to identify the relevant studies. Okay, आप सर्वे करेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये स्टडीज मेरे इंटरेस्ट से रिलेटेड नहीं है, ये इंटरेस्ट के बारे में बात कर रहा है लेकिन टोटली उसे फोकस नहीं कर रहा है. Suppose you got the 100 studies, previous studies regarding to your interest, but after surveying it, okay, you will identify 20 and 30 studies which are totally relevant with your interest. Then you have to review the 20 and 30 studies for identifying that particular problem and for identifying the objectives. Okay, so these are the basic steps to identify the research problems. Okay, to identify the research questions, to identify the objective which should be achieved by you. So ये आज का छोटा सा एक लेक्चर मैंने दिया है. Now you are free to ask me anything about it. Okay, तो सबसे पहला काम यही करना है. आज मेरा सबसे पहला ऑब्जेक्टिव यही है कि you should think from today about your interest or research problem. आपका रिसर्च प्रॉब्लम यदि आपके पास में है पहले से ही, आपकी एक्सपीरियंस से, आपकी वर्किंग एनवायरनमेंट से, दैट इज गुड. वी विल गो फॉर द लिटरेचर सर्वे. एंड इफ यू आर नॉट if you don't have any research problem from your experience and your working environment, then you should think about your interest. Okay, आपका इंटरेस्ट क्या है उसके बारे में सोचें. Then we will start tomorrow for searching the सपोर्ट, कि आपका इंटरेस्ट या फिर आपका जो प्रॉब्लम है उसके बारे में और कैसे जान सकते हैं. तो आई विल टेल यू अबाउट इट टुमारो. नाउ you people are free to discuss with me about it. Okay, अभी जिसको क्वेश्चन पूछ सकता है, पूछना है वो पूछें प्लीज. Excuse me, sir. Yeah, please. Sir, if we will miss any lecture and then देखो, यदि लेक्चर मिस हो जाएगा तो मुझे इन्फॉर्म जरूर कर दें आप लोग. ठीक है, डेफिनेटली मैं कोशिश करूंगा कि आप तक वो मटेरियल पहुंचा दूं, या फिर जो है आपको can we have the course plan or course specification something? Actually, if you visited our website, then there is a syllabus of the coursework. Okay, you can see there is a syllabus of the coursework in research and publication. In research and publication, you will find the syllabus of the coursework like entrance form. You all filled entrance form, na? Yes. So in the same section, you will find the research coursework syllabus. Okay. Okay. There is a difference of the there is a difference there is a difference in one subject. Okay. पहले जो subject था वो था social ethics and the principle of management. पहले उस पेपर का नाम था social ethics and the principle of management. अभी हमने उस पेपर का नाम कर दिया research ethics. तो वो एक दो दिन में करेक्ट होके अपलोड हो जाएगा. लेकिन अभी आपके पास जो है वो है सोशल एथिक्स एंड द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट. हमने वो रिमूव कर दिया है और उसका पेपर का नाम अभी कर दिया है. How many total subjects do we have to study? शायद आपने कल मेरे क्लास लिया नहीं, मुझे ऐसा लगता है. Yes, means I missed something because there was some network issue. Okay. There are the 4 papers. There are 4 papers. Okay. Good morning, sir. I have a question. Yeah, please. Good morning, sir. Good morning. Sir, I am Iqbal from Jammu. Yeah, सर मेरे को एक क्वेश्चन पूछना था आपसे. लाइक जो भी हम टॉपिक सेलेक्ट करेंगे दैट इज मतलब रिलेटेड टू आवर सब्जेक्ट, और हम कुछ भी मतलब सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी टॉपिक. देखो कोई भी टॉपिक ले सकते. प्रेजेंटली जो है, जो भी सीन जो चल रहा है प्रेजेंटली, वो इंटरडिसिप्लिनरी एरियाज का चल रहा है. इंटरडिसिप्लिनरी एरियाज का चल रहा है. तो सपोज आपका सब्जेक्ट क्या है? व्हाट्स योर सब्जेक्ट? इकबाल? इंग्लिश. ओके. सो देखो अभी प्रेजेंटली जो सीन चल रहा है इंग्लिश. यस. ओके. अभी जो प्रेजेंटली जो स्कोप चल रहा है ना स्टडीज का, वो इंटरडिसिप्लिनरी चल रहा है. तो होता क्या है कि बेसिकली इंग्लिश में मोस्टली जो है एनालिटिकली स्टडी की जाती है. समझो मेरी बात आप. एनालिटिकली स्टडी, एनालिसिस करते हैं. दे आर गोइंग टू एनालिसिस ऑफ द नॉवेल्स ऑफ द वेरियस ऑथर्स. ओके. लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इंग्लिश में कोई भी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च नहीं होती. ठीक है. तो आप यदि चाहते हैं कि कुछ डिफरेंट करना है आपको, तो मैं ये नहीं कहता कि मैडम को बोल के ला. ये नहीं कहता कि आपको जो है
डेफिनेटली आपको इंग्लिश सब्जेक्ट में ही कुछ करना है, यू कैन डिजाइन सम इंटरडिसिप्लिनरी स्टडीज, ओके, लाइक नो इफ यू वांट टू सी, इफ यू आप जैसे आप इंग्लिश की बात करें तो आप जो है स्कूल लेवल में जो इंग्लिश का जो स्टैंडर्ड्स है, ठीक है, जम्मू में या फिर अदर स्टेट्स में वो देख सकते हैं, तो वो आपका एक्सपेरिमेंटल हो जाएगा, आपकी इंग्लिश की स्टडी भी हो जाएगी और आपका एक्सपेरिमेंटल भी हो जाएगा। तो लोग अभी क्या कर रहे हैं, प्रेजेंटली जो सीन चल रहा है वो चल रहा है कि नो फेमिनिज्म इन द नोवेल ऑफ द कमला मार्कंडे, ठीक है, एंड नो मैन एंड वुमन रिलेशंस इन द नोवेल्स ऑफ द XYZ, ओके, ऐसी बातें करते हैं। तो मैं मानता हूं कि डेफिनेटली यू कैन गो नो इन डिफरेंट स्टडीज, ओके, और ऐसा कुछ नहीं है कि आप इंग्लिश में ही करें, जैसे आप जो है अलग डिजाइन कर सकते हैं, उसको आप अपने सब्जेक्ट के साथ रिलेट कर सकते हैं। जी सर, थैंक यू सर, Okay. थैंक यू सो मच। वेलकम। कुछ और पूछना है आप लोगों को प्लीज? सर मेरे को पूछना है जी। सर, ये जो इंटरेस्ट का जो टॉपिक लेना है, तो मैंने MBA किया है, तो उनमें से कोई भी टॉपिक ले सकते हैं स्टडी वाइज? ये आपकी चॉइस है, मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है, आपको कौन सा टॉपिक लेना है, जो भी आपका इंटरेस्ट का है या फिर आपको कोई भी एक्सपीरियंस है इस तरह का, तो ये आपका क्राइटेरिया है, ओके। हाउ विल यू मेक इट डिफर फ्रॉम अदर्स, ओके, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आई विल हेल्प यू टू सर्च द previous studies, okay, in support of your interest, in support of your experience, okay। तो ये आपका खुद का एक पर्सनल मैटर है कि आप किस तरह की स्टडीज लेते हैं। It's matter between the it will be decided between the supervisor and you, okay। If you have some interest in a particular, if you have interest in some particular subject, then you should think about the guides area also, supervisor area also. Suppose you are selecting a different area, and your supervisor have different experience in the a particular research, okay, so you should try to match the interest of your and area of the supervisor. It should be matched, okay। Suppose I am person of the education, okay, like, okay, education classroom management, से उसके फीचर्स बताए थे कि ड्राइवेबल होनी चाहिए, ऑप्टिम जो है सिग्निफिकेंट होनी चाहिए, है ना, और जो है तो वो मैंने आपको बताया, तो कंसाइज भी होनी चाहिए, तो वो मैंने आपको बताया, क्लियरली डिफाइन होनी चाहिए। तो डेफिनेटली ये भी उसमें है कि आप उसको डेफिनेटली जो है इसी तरह से डिजाइन करें। रिसर्च प्रॉब्लम्स इज द मेन थीम, ओके। आफ्टर दैट हाउ मेनी ऑब्जेक्टिव यू डिफाइन करके चलते हैं, तो वो भी एक इश्यू है, आगे बात करेंगे उस बारे में। जी सर, जी ओके सर, थैंक यू। या एनी अदर यू वांट टू आस्क द क्वेश्चंस, ओके, जो पूछना चाह रहे थे, प्लीज। Sir, I have one question, sir. Yeah, please. Sir, you told us that the data should be relevant. So, yeah. Like if we choose data and we have got load dispatch center and it collects regular data periodically. So can that data be authentic? Like we can't say that we have collected it from some official website. We will be collecting it from our own organization. Yeah, actually, I go to your point. There are the two types of data, okay. If you will discuss about it, okay, there are two type data, okay. One is the primary data that will be generated by you only, okay, and secondary data that will be get by the various sources, okay. So if you are generating your own data, that is a good thing. That is the pure data that will be work for the further research, okay. Who is saying you can't generate your data, okay? If you are able to generate your data, that is a good thing, na? Primary data means that will be generated by you, but how will you generate? That is the important thing. You are generating these data by the verbal thing, so that is a very bad thing, okay. So but there will be some base. There will be some base, okay. Yes, there is an official base. Yeah, there is one department. It generates data. It collects generated data, and it historically actually keeps. We will discuss about the data collection, other things, okay. That time we will discuss more about it, okay. But if you are generating your own data, that is good. Means there is a primary data, okay. That is a good, na? That is good. Okay, sir. And primary data can be collected by the interview,
by survey, by observations. Okay, so Okay, sir. there are so many sources to get the primary data. So that is a good thing. Okay, your primary data will work for the other studies as a secondary data. Okay, sir. And then I have one more question, sir. Like you told us that we can see our organization and we can find out the problems over there. So I'm not saying you have to just for an area, area. Yeah. So if we have got 2-3 departments and we should generalize our topic so that later on, if we want to be specific and we want to little bit modify our topic, then there won't be any problem. I want to say one thing. Okay, why you are thinking about the variation in the titles? Okay, just you choose your title which have a broad scope about your organization, and you should assure there is no need to change in future. Okay, sir. So what could be the title can be changed. Title cannot be changed, but you can change some research question in future. Okay, if you want to put some more questions about your organization in future, then you are free to choose. Okay, you are free to insert the new research questions. Okay, but if you are talking about the title change, then that is not possible. You should ask about the change in the research question. Can I change some research questions in the future? Definitely you can change. You can put some more questions also. Suppose there are the 2 departments in your organization. Okay, one is the HR department and another finance department. Okay, but you didn't take some research questions about the HR department. Now you want to put in your research. Go ahead for that. That is what my question is, sir. Means how broad could be our research topic, like the issues of problems faced by electricity companies or load dispatch centers, load forecasting. That should be our means. How broad could be our topic, or what should be the limitation to our topic? Actually, if you are talking about the very specific subjects, okay, if you want to take a study about the electricity and other things, okay, then first you design. Okay, we will think about it. Okay, right now you want to take a title from my side. It's not possible for me. If you are not giving me if you are not able to give me support documents, what are the existing situation is there? How can I design your title? Okay, sir, got it, sir. Thank you, sir. Again, you are again me asking about your electricity problem about please give me some support about your organization. Okay, what are the situation is there? What type facilities are existing is there? What type problem you are facing is there? Then we can design some title. Okay, but right now it is too much difficult to give a particular title about your problem. Okay. Okay, got it, sir. Thank you, sir. Okay. If anybody will ask me, please tell me title, sir, about I'm working in the SBI, and give me some title about it. Okay, how can I give you? Sir, myself Praveen, sir. Hello? Yeah, Praveen, please. Sir, can you share the presentation which you have done today, sir? It is very nice. Actually, प्रवीण जी है ना, मुझे इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है कि शेयर जब हम इस लेवल पे नहीं है कि हम शेयर करें. We have to make it. Okay, you have to make your own. मैंने ऐसा कुछ नहीं दिया आपको जो शेयर करना पड़े. मैंने वही बातें किया, जनरल थिंग्स मैंने स्टडी की हैं. Anyway, I will provide it. Okay, don't worry about it. Okay, anyway I will give. Okay, लेकिन मेरा ये मानना है कि ऐसा मैंने कुछ बोला ही नहीं. हम एक जनरल डिस्कशन किया है आज कि रिसर्च क्या होती है, रिसर्च के पर्पस क्या होते हैं. You have presented it in a nice way, easy to understand. It is very nice, sir. Very nice lecture you have given. Anyway, I will give. Don't worry about it. Okay. अभी तो जर्नी स्टार्ट किया है. अभी तो प्रवीण जी जर्नी स्टार्ट किया है. अभी तो हम फ्लो में नहीं आए ना. आफ्टर 2 and 3 days है ना, हम जब फ्लो में रहेंगे तो और भी बहुत कुछ डिस्कस करेंगे. सो टुमारो वी विल डिस्कस अबाउट द हाउ कैन वी सर्च द प्रीवियस स्टडीज. ओके, बिकॉज आई टोल्ड यू इफ यू हैव सम इंटरेस्ट इन ए पर्टिकुलर एरिया, देन हाउ कैन यू गेट द इंफॉर्मेशन अबाउट इट. ओके, यदि मैं सोचता हूँ मुझे कोविड में स्टडी करना है और कोविड में भी स्टडी ये करना है कि द इम्पैक्ट ऑफ द कोविड ऑन द ओल्ड एज पर्सन्स. ओके, तो मुझे कैसे मिलेंगी उसकी स्टडीज, कहाँ से मिलेंगी?
वी विल डिस्कस अबाउट इट। ओके, मेरा इंटरेस्ट यदि जो है वो एसबीएम में एम्प्लॉय बिहेवियर पे है, तो मैं हाउ कैन यू गेट द इंफॉर्मेशन? ओके, मेरा यदि इंटरेस्ट जो है इन्वायरमेंटल डिस्टर्बेंस इन द हिमालय नेपाल रीजन है, देन हाउ कैन यू गेट द डेटा अबाउट इट? ओके, यदि मेरा इंटरेस्ट जो है वो प्राइमरी स्कूल क्लासरूम मैनेजमेंट में है, तो हाउ कैन आई गेट डेटा अबाउट इट? ओके, हाउ कैन आई गेट द इंफॉर्मेशन अबाउट इट? हाउ कैन गेट द मटेरियल अबाउट इट? ओके, तो कल हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। यदि आपके कोई क्वेश्चंस हैं, आप प्लीज मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं, पर्सनली भी डिस्कस कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। जल्दी हम व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट कर रहे हैं, तो हम उसमें आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट करते रहेंगे। और क्लास के बाद में नहीं तो या तो पहले मेरे से पूछ सकते हैं या फिर क्लास के बाद में पूछ सकते हैं, क्योंकि हम ऑनलाइन बैठे हुए हैं तो बड़ा डिफिकल्ट होता है कि जो है बीच बीच में हम डिस्कस करें। तो मेरे एक नेचर है कि मैं बाद में काफी टाइम देता हूँ। यू कैन डिस्कस सो मेनी थिंग्स अबाउट योर रिसर्च, अबाउट माय लेक्चर आफ्टर द क्लास। ओके, जब तक जरूरी नहीं हो तब तक बीच में डिस्टर्ब ना करें हम एक दूसरे को, तो अच्छा रहेगा। और आपको लगता है कि दैट इज द इम्पोर्टेंट, देन यू कैन राइज योर हैंड थ्रू द ऑनलाइन थ्रू द जूम मोड। ओके, आप जो है हैंड राइज कर दे, मैं आपको मौका दूंगा, या फिर आप चैट बॉक्स में क्वेश्चन छोड़ सकते हैं, देन आई विल आंसर इट। ओके, क्योंकि बीच में जब हम डिस्टर्ब करते हैं तो वो आपके लिए और मेरे लिए तो ठीक है, लेकिन बाकी लोगों के लिए थोड़ा सा अनकंफर्ट हो जाता है। क्योंकि ये ऑनलाइन क्लास है, इसमें मोर देन जो है आपके 57 स्टूडेंट्स हैं, तो यदि हम एक दूसरे से डिस्कस करने लगे तो हमारा जो क्लास मटेरियल है वो तो शायद डिस्कस नहीं हो पाएगा। तो आवर प्राइम ऑब्जेक्टिव टू गिव सम बेसिक आइडिया। आई एम नॉट गिविंग यू assurance about the full knowledge, okay, but I am giving you assurance about the basic things about the research so that you can conduct your research in very well way. मैं दोनों बातें बताता हूं आपको, इन जनरल वे एंड इन सिंघानिया के हिसाब से जो डॉक्यूमेंट्स आपको करने हैं, जो आपको सबमिट करने हैं, उस तरीके से आई विल टॉक अबाउट बोथ थिंग्स। ओके, सिंघानिया यूनिवर्सिटी में क्या चलता है और जनरल वे में क्या चलता है, तो हम दोनों साथ साथ में डिस्कस करेंगे। बेसिकली मैं रिसर्च मेथोडोलॉजी का कुछ पार्ट लेता हूँ एंड रिसर्च एथिक्स मेरा पार्ट रहेगा। तो बेसिकली रिसर्च मेथोडोलॉजी, रिसर्च एथिक्स एंड रिव्यू रिपोर्ट, 3 पेपर जो है मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ में। आई थिंक मोहम्मद नशीम आजम, प्लीज व्हाट डू यू वांट आस्क? मोहम्मद नशीम प्लीज, नशीम, मोहम्मद नशीम। तो आज का मीटिंग एंड करें, आप लोगों की परमिशन हो तो सभी की? Yes, yes. Thanks so much. It was lovely. Thank you, sir. Thank you. Okay, sir. Thank you, sir. Will there be any other lecture, sir? Thank you, sir. ना, today there is no lecture. Okay, आज कोई लेक्चर नहीं है, आज आप फ्री हैं। Okay, sir. Thank you, sir. आपने कल बताया था कि 1 बजे तक क्लास चलेगी, 10 बजे से लेके 1 बजे। अभी आप कहो, यदि आप मेरे से सर क्लास 12 तक करिए सर। 12 So this is enough. नहीं, यदि जो है आप बोर नहीं हुए हैं तो फिर एक काम करते हैं, 10 मिनट के बाद में मिलते हैं और नो सर नहीं सर, बिल्कुल बोर नहीं हुए सर, बहुत इंटरेस्टिंग लेक्चर रहा, आपने समझाया। तो आई जस्ट वांट कि 1 बजे तक आप उसका लेक्चर लें, जो भी आप समझाना चाहते हैं। एक्चुअली आज जो है हमारे एक साथी हैं, वो थोड़ी बिजी हैं, तो ही विल ज्वाइन टुमारो, और डेफिनेटली कल आपको 1 बजे तक ही क्लास मिलेंगी, और दोनों लेक्चर के बीच में 10 मिनट का गैप भी मिलेगा। ओके, Yes, sir. Yes, sir. Okay, thank you very much. Thank you, sir. प्लीज अटेंडेंस लगा दीजिए हमारी कि हमने। थैंक यू सर। हाँ, ये हुई ना काम की बात, इतनी देर। थैंक यू सर, थैंक यू। ये काम की बात। हाँ चलो, सब होगी। क्या कह रहे हैं? सर कल क्लास शुरू होगी 10 से लेके 1 बजे की क्लास। ओके सर, प्रणाम सर। ओके सर, नमस्कार। Thank you, sir. प्रणाम सर, प्रणाम।